Playing with numbers. Odd one out. Lesson 1, Part A. Yes, by the end of this lesson, the student will be able to pick out odd one object, identify different objects. Okay, students, here is very interesting video. Let's see this first. Kids Camp. Hi, I'm Ellie. Ooh, what is this? Yes, students. Yes, you enjoyed this video? Right. Now it's your turn. Circle the odd objects. Here are some objects. Look at these objects. These are the same object, but this object is not same. Yes, this is also a cupcake. This is cupcake, but this is lollipop. So this is not the same. So we will circle it. Yes. These are some objects. Here are ladybirds. These are same, but this is not a ladybird. This is a leaf. Circle the odd object. Yes. Next. Wow. Circle the things which does not belong to the collection. Okay, look at this picture. Here are some objects. Here is a cat. Cat is an animal. Mouse is an animal. Dog is an animal. Cow is an animal. But carrot is not an animal. Right. So carrot is not belongs to the other objects. Right. So we will circle it. Next, cross the different things in each collection. Here are some objects in this line. Yes, once again, cat is animal, dog is animal, mouse is animal, cow is animal. Yes, but balloon is not an animal. So we will cross out the balloon. Yes. Look at this. There is also the collection of some objects. Right. Tomato is a vegetable. Brinjal is a vegetable. Potato is a vegetable. And carrot is also a vegetable. But look at this. Butterfly is not a vegetable. So we will cross the butterfly. Sparrow. Wow, sparrow is a bird. Parrot is a bird. Okay, crow is a bird and pigeon is a bird. But apple is not a bird. So we will cross the apple. Right, students? Now, it's your turn. Open your textbook, page number 1. Yes. जी ये पेज आपके सामने है, आपने टेक्स्ट बुक खोली, ये पेज आपके सामने है. अब यहाँ पे भी आपके पास कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स है, राइट. यहाँ पे ऊपर वाले खाने में देखें, here are the collection of some objects, बट आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो इस कलेक्शन से बिलोंग नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे आपको पेंसिल्स नजर आ रही हैं, ये सारी पेंसिल्स हैं. दीज आर द सेम ऑब्जेक्ट, बट razor is not belong to the collection. Then you will circle the razor. Yes. Now, अब आप ये खुद करेंगे. जी मुझे बताएं इसमें ज़रा क्या क्या है. जी इसमें आपको नज़र आ रही है जी वेजिटेबल नज़र आ रही है, टोमेटो वेजिटेबल है जी, कैप्सिकम नज़र आ रही हैं, ये भी वेजिटेबल्स हैं. दीज आर द वेजिटेबल्स, बट दिस इज नॉट द वेजिटेबल. तो आप किसको सर्कल करेंगे? यस गुड, आप बॉल को सर्कल करेंगे बिकॉज वेजिटेबल are the same collections but ball is a different one. Now homework, पेज नंबर 7. आपको होमवर्क बुक का पेज नंबर 7 आपको दिया गया है जी. ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इसको आप खुद से करेंगे. और इसमें आपने क्या करना है कि लुक एट द पिक्चर ऑन द लेफ्ट. ये जो लेफ्ट पे पिक्चर्स दी गई हैं इन्हें आप देखेंगे. सर्कल द पिक्चर दैट आर सेम एंड क्रॉस आउट द पिक्चर दैट आर डिफरेंट. जी जो सेम पिक्चर है उन्हें आप सर्कल करेंगे और जो डिफरेंट है उन्हें आप क्रॉस आउट कर देंगे. ठीक है जी. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज.